Hello and welcome to EduMiles Academy. In today's newspaper analysis, we are going to discuss some important newspaper articles from 9 September 2022. For more study materials and updates, you may also join our WhatsApp group. The link of the WhatsApp group will be provided in description below. So this is the list of the topics that we're going to cover in today's session. So the first article is about the Eastern Economic Forum. So, about this Eastern Economic Forum, this has been taking place recently from the 5th to 8th September, and India has also participated in this forum, right? So, PM Modi has also addressed in one of the session. So, we'll just learn about this Eastern Economic Forum, whose initiative is it, and यहाँ पे जो न्यूज़ है, अब ये न्यूज़ कहता है कि इंडिया इज़ कीन टू स्ट्रेंथन इट्स पार्टनरशिप विद रशिया. तो रशिया के साथ जो भी टाइज है, सो इंडिया बेसिकली वांट्स टू स्ट्रेंथन इट्स टाइज. And also India also wants to explore the cooperation in the field of energy. ठीक है, तो this is the news which has been currently published in the Indian Express. This article is going to be important for prelims as well as the GS paper 2 from international relations point of view. So through this article we'll also learn about some of the some of the points about the India-Russia relation. So let's see. So now let's learn about this Eastern Economic Forum. So this Eastern Economic Forum was established in the year 2015 by the Russian President Vladimir Putin. Okay, so every year you'll find the meetings of this Eastern Economic Forum taking place in this Russian city of Vladivostok. So this Vladivostok, as you can see, this city lies to the far eastern side of Russia. Okay, so this forum was established as a platform for debate of global economic concerns, then regional integration and the development of new industrial and technology sectors, as well as global difficulties confronting Russia and other countries. So it has also grown into an international forum for addressing this strategy for strengthening the political, economic and cultural links between Russia and the Asia Pacific region. So one thing that you should know about this Eastern Economic Forum is that this forum was established by Russia, and the most important target for establishing this economic forum was to strengthen the ties between Russia and the other countries of the Asia Pacific region. Okay? So if you see in this map, this part of Russia towards the eastern side, now this region is known as the Far Eastern Federal District. Okay, this is the same district where the city of Vladivostok lies, where the annual meetings of the Eastern Economic Forum takes place. अब ये जो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम है, इन दिस ईयर इट इज़ करेंटली टेकिंग प्लेस फॉर द 7th टाइम, जहाँ पे इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है. सो 2015 में एस्टैब्लिश हुआ था, 2022 में इट हैज़ बीन टेकिंग प्लेस फॉर द 7th टाइम. अब अगर आप देखोगे, इफ यू कंपेयर दिस रीजन विद द अदर रीजन्स ऑफ रशिया, देन टेरिटोरी वाइज और द रीजन साइज वाइज यू कैन से इट इज द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ रशिया. ठीक है, एंड ऑल्सो इफ यू कैन सी इन दिस आर्टिकल, यहाँ पे बताया गया है कि दिस रीजन इज रिच इन ऑयल, नेचुरल गैस, coal and gold. It is the largest province of Russia, as I already told you, but it is very sparsely populated. Now, this is sparsely populated क्यों? Because of the climatic disadvantages. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो क्लाइमेट है, इट इज क्वाइट हार्श. ठीक है, सो विच मेक्स एग्रीकल्चर डिफिकल्ट, एंड यू नो एग्रीकल्चर में काफ़ी पॉपुलेशन डिपेंड करता है. सो बट नेचुरल रिसोर्स अगर आप नेचुरल रिसोर्स का अगर आप बात करो, तो यहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा एक रिजर्व आपको मिलेगा इन द केसेस ऑफ ऑयल, नेचुरल गैस, कोल एंड गोल्ड. ठीक है, अब एक बात है कि जैसे इंडिया को डिवाइड किया जाता है स्टेट्स में, अभी रशिया को भी डिवाइड किया जाता है इनटू सर्टेन फेडरल रीजन. सो द मेन गोल, अगर इस फोरम का बात करोगे, इस फोरम का मेन गोल है रशिया का जो ये फार ईस्टर्न जो डिस्ट्रिक्ट है ना, फार ईस्टर्न जो रीजन है, इसी पे फोकस करने के लिए, ताकि इसे इकोनॉमिकली और टेक्नोलॉजिकली और भी एडवांस और डेवलप किया जा सके. ठीक है, सो दिस रीजन इट लाइज टू द ईस्टर्न मोस्ट साइड ऑफ रशिया. सो द गोल इज टू सिक्योर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द फार ईस्ट रीजन and also to connect the region with globally significant locations, especially from the Asia Pacific region. ठीक है, सो इसी रीजन को डेवलप करने के लिए ये फोरम को स्टार्ट किया गया था बैक इन द ईयर 2015. सो यहाँ पे देखिए, इन दिस केस अगर आप देखोगे, यहाँ पे बताया गया है कि इंडिया को इस रीजन से क्या बेनिफिट मिल सकता है. सो हाउ कैन इंडिया बेनिफिट फ्रॉम मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन द रशियाज फार ईस्ट रीजन.
तो पहला यहाँ पे बताया गया है कि एनर्जी रिक्वायरमेंट, सो रीजन एज आई टोल्ड यू कि ये रिच इन ऑयल रिजर्व है, सो इंडिया को हेल्प होगा टू मीट द एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। अब देखिए एक बात ऐसा भी है कि इंडिया जो है ना, इंडिया इज एन एनर्जी डेफिशिएंट कंट्री, ठीक है। तो इंडिया का जो एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है 80% ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट आर मेट थ्रू द इंपोर्ट्स ओनली। सो इट इज, तो यहाँ पे जो इट्स ओन रिजर्व्स ऑफ ऑयल हो गया इंडिया का, नेचुरल रिजर्व्स एंड कोल आर नॉट सफिशिएंट टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ह्यूज पॉपुलेशन। सो इन दैट केस यहाँ पे सो कनेक्टिविटी विद द फार ईस्ट विल इम्प्रूव और मे रिजॉल्व आवर एनर्जी सिनेरियो, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट बताया गया अबाउट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। सो द रीजन इज ऑलवेज वेरी स्पार्सली पॉपुलेटेड, सो इन्वेस्टमेंट इन द रीजन में क्रिएट सम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडियन वर्कर्स। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन माइनिंग हो सकता है, ड्रिलिंग हो सकता है, तो ऐसे फील्ड्स में, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। सो इन दिस रीजन वी कैन से कि एम्प्लॉयमेंट सिनेरियोज कैन बी यू कैन से थ्रू इन्वेस्टमेंट from the Indian side, the employment opportunities can be created in the field of mining, drilling, etc. So in this region, so this region may also help to tackle the unemployment scenario of India. So let's learn about the current development. As I was saying about the 7th Eastern Economic Forum, so this particular forum took place in the Russian city, in the port city of Vladivostok. तो इसी में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था, और यहाँ पे इंडिया एंड रशिया दे हैव जॉइंटली एग्रीड फॉर अ सी लिंक बिटवीन व्लादिवोस्टोक, द कैपिटल ऑफ रशियन फार ईस्ट डिस्ट्रिक्ट जो मैंने बताया था, इस रीजन का ये कैपिटल है, दिस व्लादिवोस्टोक सिटी और चेन्नई के बीच में। तो ये जो प्रोपोज सी लिंक है, दिस इज गोइंग टू बी ऑफ अबाउट 5647 नॉटिकल माइल्स। द proposed sea link जो आप देख रहे हो in the map will decrease the distance manifold, so it will bring Russia to our proximity. So hence the far east region, which is minerally you can say, which is naturally very rich in minerals, so this particular region will not be that far, right? So it will be accessible for India for various purposes, ठीक है। So about the importance of the Chennai Vladivostok sea link, the first one is यहाँ पे कहा गया about the economic significance, to increase India's accessibility to Russia's far east region and opens up possibilities for India to connect with northern Europe using an Arctic route, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे करेंटली इफ वी नीड टू ट्रेड विद नॉर्दर्न यूरोप, इफ यू लुक एट दिस कंट्रीज अबाउट द, इफ यू लुक एट द स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, तो इफ इंडिया नीड्स टू ट्रेड विद देम, सो वी नीड टू यूज द मुंबई टू सेंट पीटर्सबर्ग सी लिंक, ठीक है। तो सेंट पीटर्सबर्ग, ये जो मुंबई से सेंट पीटर्सबर्ग का जो ये सी लिंक है, सो वी नीड टू यूज दिस सी लिंक विच गोज वाया दिस बेबल मंडे, रेड सी, देन सुएज कैनल, so which is you can see is quite long, ठीक है। so the proposed sea link, ये जो व्लादिवोस्टोक एंड चेन्नई का जो sea link होने वाला है, so this proposed sea link can also be used to trade with the northern countries, ठीक है। ये northern countries के साथ भी ट्रेड करने के लिए यूज किया जा सकता है, which अब ये जो proposed sea link है, so this is also believed to decrease the distance from India to the northern countries, but this would be functional only during the peak summer months. Why? Because in the winter months this route, अगर आप यहाँ से if you navigate this region to the Arctic Sea, तो डेफिनेट है कि यहाँ पे बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉक्सिमिटी टू द नॉर्दर्न पोल, द रीजन, ये जो आर्कटिक सी है, इट वोंट बी नेविगेबल इफ इट इज नॉट अ समर मंथ, ठीक है। सो नाउ इफ यू सी द प्रोपोज रूट, यहाँ पे देखिए अभी नेक्स्ट यहाँ पे कहा गया है कि अबाउट दिस प्रोपोज जो सी रूट है ना, तो यू कैन सी कि दिस इज रनिंग टू द साउथ चाइना सी, ठीक है। तो इट विल ऑल्सो हेल्प इन काउंटरिंग चाइना's aggression in the South China Sea, India's response to the Belt and Road Initiative of China, which we call it as a necklace of diamond strategy. So now if you look at this proposed sea route, it has been done, as I told you, through the South China Sea. अब यहाँ पे जो रीजन है ना, द रीजन फॉर दिस इज टू काउंटर द बैलेंस, यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे बैलेंस किया गया है, काउंटर किया गया है चाइनीज एग्रेशन को, कहाँ पे, इन द साउथ चाइना सी, ठीक है। जो चाइना अपना क्लेम करता है, तो इसी को बैलेंस करने के लिए, बिकॉज द साउथ चाइना सी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया ट्रेड पर्पसेस, ठीक है। तो इसीलिए इसे काउंटर करने के लिए नाउ दिस सी लिंक इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। अब द रूट कैन ऑल्सो बी यूज टू काउंटर द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना। सो द बेल्ट एंड रोड initiative is a development strategy to build a trade, investment and infrastructure network connecting the three continents with China, that is Asia, Africa and Europe. तो ये चाइना का एक इनिशिएटिव है, ठीक है। सो एंड दिस इनिशिएटिव इज बेस्ड ऑन द एंशियंट ट्रेड रूट विच इज नोन एज सिल्क रूट कहा जाता है, ठीक है। बट ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इसका इंडिया के लिए डिसएडवांटेज है। सो द डिसएडवांटेज फॉर इंडिया फ्रॉम द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इज दैट इंडिया हैज, यहाँ पे अगर ये जो मान लीजिए इफ द बेल्ट
बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अगर ये पूरा फंक्शनल हो जाता है ना, सो इंडिया विल बी ब्लॉक्ड, यू कैन से इंडिया विल बी एनसर्कल फ्रॉम ऑल इट्स साइड्स, बिकॉज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में यू विल फाइंड द नंबर ऑफ मोड्स यहाँ पे यूज किया गया है. फॉर एग्जाम्पल रोड्स है, रेलवेज है, सी रूट्स है. तो अगर ये सब अगर मान लीजिए कि फिर बिकम्स फंक्शनल, देन हो सकता है कि इंडिया इंडिया वुड फेस अ काइंड ऑफ इकोनॉमिक ब्लॉकेड, यू कैन से. ठीक है, एक तरीके से हर तरफ से इंडिया को ब्लॉक किया जाएगा. ठीक है, सो द न्यू प्रोपोज रोड कैन बी यूज एज एन इंडियाज काउंटर टू द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना. ठीक है, सो दिस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना इज ऑल्सो नोन एज द स्ट्रिंग ऑफ, यहाँ पे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहा जाता है. ठीक है, दिस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना इज नोन एज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स. एंड इंडिया का जो काउंटर होता है ना, इंडिया का जितना भी सारा इनिशिएटिव होता है अगेंस्ट द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसको कहा जाता है नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटेजी. So this particular sea link can also be a part of the necklace of diamond strategy. So now, because of such strategic importance of the region, India has also announced, as you can see, in the year 2019 only, India ने announce किया था an investment of $1 billion. ठीक है, so which is expected to bring some good outcomes for India as well. Now this policy was termed as the Far Act East policy. क्या कहा जाता है इसे? इसे Far Act East policy कहा जाता है. I hope you have heard about this Act East policy. The Act East policy focuses on the Southeast Asian nations, and this Far Act East policy, it focuses on the Far East region of Russia. So as I was saying about India's participation in this Eastern Economic Forum, so PM Modi participated in this Eastern Economic Forum, but he participated virtually. So he attended the meeting, he addressed the plenary session of the 7th Eastern Economic Forum through a video conferencing. So let's see what did he say in this particular economic forum. So he spoke about the Russia-Ukraine conflict. देखिए, उन्होंने ये बताया कि Russia-Ukraine conflict and the COVID-19 pandemic had a major impact on the global supply chain. So he has been saying this from the very beginning of the war itself. And he also said that India has emphasized the need to adopt the path of diplomacy and dialogue. तो यहाँ पे ये जो डिप्लोमेसी एंड डायलॉग है, दिस टर्म हैज बीन यूज्ड इन रिगार्ड्स विद द रशिया यूक्रेन वॉर. ठीक है, सो ऑन एनर्जी कोऑपरेशन के बारे में मोदी जी हैज सेड दैट इंडिया वाज कीन टू बूस्ट कोऑपरेशन विद रशिया, particularly in the areas of energy like petroleum products and coal. So one thing you should know that there are high chances of a question to be asked from Russia-Ukraine conflict or the war which is currently going on or its impact on India. So in that case, it's very necessary to mention India's stand. कि इंडिया का स्टैंड कैसा है. ठीक है, लाइक यहाँ पे इंडिया में क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है, तो इस तरीके का क्वेश्चन आने का बहुत चांसेस है. सो इफ यू नीड टू पुट अप इंडिया स्टैंड, तो यू शुड ऑलवेज मेक यूज ऑफ सच टर्म like India or the Prime Minister of India has been emphasizing on the need to resolve dispute through what? Diplomacy and dialogue. These terms are very important in the case of answer writing. So such terms in your answers will help you fetch some good marks. So this is a prelims practice question which is based on the Eastern Economic Forum. Please answer in the comment section. Now the next article is about the renaming of the Rajpath as the Kartavya Path. So this has been in news currently. Ye article has been taken from the Indian Express, where Modi ji says that the Rajpath, which used to be a symbol of slavery, is now history. Okay, जो नाम Rajpath है, it used to be a symbol of slavery according to Modi ji. Now it has been changed. So this can be important for the police perspective, and also from this area यहाँ पे जो बात करेंगे हम history perspective से, तो वहाँ से GS paper 1 modern history से question बन सकता है. ठीक है. As you can see in this picture, the 2-kilometer stretch from India Gate to Rashtrapati Bhavan, which is also a part of the revamped or the restructured Central Vista Avenue. So now this has been renamed. This 2-kilometer stretch has been named as the Kartavya Path. This renaming has also been approved by the New Delhi Municipal Council. And at the same event only, where PM Modi inaugurated the Kartavya Road, statue of Subhash Chandra Bose has also been unveiled. तो ये कहाँ पे है statue? ये statue है under the canopy of India Gate. And under the canopy of India Gate only, there used to be the statue of King George, but अभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का यहाँ पे statue unveil किया गया है. Now how did this name राजपथ came? अब देखिए ये जो नाम है, this नाम को जानने के लिए you should know a little about the modern Indian history. So देखिए 1911 से पहले the capital of British India used to be Calcutta.
But in 1911, there was a decision by the British government to shift the capital from Calcutta to Delhi. And during that time only, Delhi Darbar, that is यहाँ पे दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज किया गया था, और ये दरबार ऑर्गेनाइज किया गया था इन ऑर्डर टू वेलकम किंग जॉर्ज फाइव. ठीक है, तो इसी टाइम में क्या किया गया था, टू वेलकम हिम ओनली यू कैन से दिस, यहाँ पे जो रोड है इसका नाम दिया दिया गया था किंग्स वे. ठीक है, दिस यूज्ड टू बी नोन एज द किंग्स वे. अब 1947 दैट इज इंडिपेंडेंस के बाद यहाँ पे यही किंग्स वे को ट्रांसलेट करके हिंदी में बता दिया था राजपथ. ठीक है, सो राजपथ नाम आता है फ्रॉम द टर्म किंग्स वे. सो वाई हैज़ द रीनेमिंग बिन डन? अभी ये जो राजपथ है, वाई इट हैज़ बिन रीनेम? सो एज आई टोल्ड यू कि किंग्स वे जो नाम है, किंग्स वे ये ब्रिटिशर्स का नाम है और इसी का हिंदी ट्रांसलेशन आ जाता है राजपथ. तो दिस indicates a kind of colonial mindset, है कि नहीं? So this basically indicates a kind of colonial mindset. And you should also know कि अभी ये जो अमृत जो महोत्सव चल रहा था ऑफ इंडिया 75th इंडिपेंडेंस डे, तो पीएम मोदी ने यहाँ पे बात किया था अबाउट पंच प्राण के बारे में. ठीक है, ही प्लेज काइंड ऑफ पांच प्रण. तो यहाँ पे उन्होंने ये बताया था कि यहाँ पे फोकस किया गया था टू रिमूव एनी ट्रेस ऑफ कॉलोनियल माइंडसेट. ठीक है, सो दिस इज एन इनिशिएटिव विच हैज बीन डायरेक्टेड टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर you can say that particular opinion of PM Modi only. तो यहाँ पे क्या है, तो द ब्रिटिश नेम्ड द किंग्सवे एज आई टोल्ड यू ड्यूरिंग द ईयर 1911 एंड शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली. अब इंडिया यहाँ पे इंडिपेंडेंट होने के बाद द सेंट्रल विस्ता जो ये एरिया है, दिस हैज बीन चूजन एज सेंटर ऑफ दिल्ली. तो दिल्ली का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, दिल्ली में यहाँ पे सेंटर जो है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन यहीं पे सेटअप किया गया था. एंड दिस प्लेस वाज रीनेम्ड एज राजपथ. सो अभी देखिए यहाँ पे रीनेम इसीलिए यहाँ पे किया गया है बिकॉज राजपथ, राज का मीनिंग क्या है, पावर है, राइट? सो राजपथ इट बेसिकली इंडिकेट्स पावर. ठीक है, एंड व्हाट इज कर्तव्य? कर्तव्य इंडिकेट करता है ड्यूटी. So this is basically you can say a significant shift of ideas from what? From power to duties. ठीक है, तो यहाँ पे कर्तव्य पथ would indicate public ownership and empowerment. So the renaming of Rajpath as the कर्तव्य पथ or the duty path symbolizes the emphasis on duties over rights. Okay, and now about the statue of Netaji, which has been unveiled in the same event only. So the statue of Netaji is made up of granite. Okay, now it is a fitting tribute to the immense contribution of Netaji to our freedom struggle. Okay, I'm also planning to take up some sessions on the various contributions of the freedom fighters. So in that case, मैं आपको बताऊंगा कि about the various contributions of Netaji as well. ठीक है, and यहाँ पे इनका जो भी सारे कंट्रीब्यूशंस है, इसी कंट्रीब्यूशंस को कमेमोरेट करने के लिए ये स्टैचू बनाया गया है. ठीक है, एंड वुड बी अ सिंबल ऑफ द कंट्रीज इंडेटेडनेस टू हिम. अब ये जो स्टैचू है, दिस हैज बीन क्राफ्टेड बाय श्री अरुण योगीराज, हु वाज द मेन स्कल्पटर थे वो. नाउ दिस स्टैचू इज ऑफ 28 फीट ये हाइट है एंड इट वेग्स 65 मेट्रिक टन. ठीक है, so this you can see the picture of the canopy of India again, how it has changed over the years. So during the British time, there used to be a statue of King George V, which also continued for some time after independence as well. So you can see 1952 में ये फोटो लिया गया था where King George V ही यहाँ पे है. अब ये जो फोटो है, this photo is of recent time of the last year 2021, जहाँ पे you can see this empty. So in 1968 में ना ये जो स्टैचू है, ये स्टैचू ऑफ किंग जॉर्ज had been removed. So from 1968 से till recent times ये खाली ही था, but currently यहाँ पे नेताजी का स्टैचू यहाँ पे प्लेस किया गया है. So based on this topic only, or not exactly based on this topic, but somewhat related to this topic, a question has been given. This question was also asked in the UPSC examination of 2008. I want you guys to answer this question in the comment section. So the next news is about the death of Her Majesty. You must have heard about this news about the death of Queen Elizabeth II, who has died at the age of 96. So Queen Elizabeth II, she was the UK's longest serving monarch, who has died on 8th of September at Balmoral, aged 96. This topic say there may be questions which can be asked in the preliminary stage, and also this news is about England. So England का जो history है, now that becomes important for us from the world history point of view from GS paper 1.
and this article has been taken from the Hindu. अब देखिए, with the death of Queen Elizabeth II, her eldest son Charles is going to be the next monarch. ठीक है, the British monarchy ये कहता है कि a new sovereign succeeds to the throne as soon as his or her predecessor died. तो जैसे ही यहाँ पे डेथ होता है, a new sovereign succeeds to the throne. सो बेसिकली यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि ये जो थ्रोन है, ये थ्रोन कभी खाली नहीं रह सकता है. ठीक है, सो द रॉयल ऑफिशियल्स हैव कंफर्म दैट ब्रिटेन्स न्यू मोनार्क विल बी नोन एज किंग चार्ल्स थ्री कहा जाएगा इनको, किंग चार्ल्स थ्री. सो द फॉर्मर, ही यूज्ड टू बी द फॉर्मर प्रिंस ऑफ वेल्स एंड ही हैज बीन नोन एज द प्रिंस चार्ल्स सिंस हिज बर्थ इन 1948, बट नाउ ही विल बी नोन एज किंग चार्ल्स थ्री. So now, as I was saying, the crown जो है, the crown is a very significant position in the British polity, so it cannot be lying vacant. ठीक है, and as such, Elizabeth's eldest son Charles, who is currently of 73, so the formerly the Prince of Wales, has immediately been he has become the King of England. So he ascended to the throne as Charles III. So about Queen Elizabeth II, so her name was Elizabeth Alexandra Mary Windsor, and she was born in April 21, 1926. So she ascended the throne back in 1952 only, at the young age of 25. Okay, so she ascended the throne after the death of her father, King George VI. So she was Britain's longest reigning monarch and second longest reigning monarch in history, behind 17th century French king Louis XIV. अब ये Louis XIV, he ruled for 72 years. ठीक है, Louis XIV ruled for 72 years, and Elizabeth II, she ruled for 72 years. So the Platinum Jubilee of Elizabeth II was recently celebrated, marking the 70th anniversary. तो 70th anniversary में the Platinum Jubilee was celebrated in यहाँ पे 70th anniversary of her accession of the Queen in 1952. So 1952 में उनका she had acceded to the throne, and 2022 में the 70 years were complete. तो इसी के लिए Platinum Jubilee में celebration यहाँ पे the Platinum Jubilee was celebrated. So she became the UK's longest serving monarch in 2015 when she surpassed. देखिए 2015 से पहले she was not the longest one, but 2015 के बाद she became the longest one by surpassing the record of Queen Victoria. Now Queen Victoria जो है, she was her great grandmother. ठीक है, now she ruled from 1837 to 1901, so she ruled for almost 64 years. उसके बाद after 2015 Elizabeth II has become the UK's longest serving monarch. ठीक है. So now about monarchy. So monarchy is the oldest form of government in which the king or the queen is the head of the state. So head of the state कौन रहता है monarchy में? It is king or the queen. So in case of India भी, you should know the position is similar to the president only, who is the ceremonial head and who is also the head of the state in the case of India. ठीक है, तो India में head of the state कौन है? It is the president. So the British monarchy is known as a constitutional monarchy. So British monarchy, it is not a pure form of monarchy, because in the pure form of monarchy, all the decisions are taken by the king or the queen. Okay? But in this case, it is a constitutional monarchy where the ability to make and pass the legislation resides with an elected parliament. तो यहाँ पे जो भी laws वगैरह बनेगा ना, the ability to make and pass such laws will reside with the parliament. ठीक है, so as head of the state, the monarch undertakes certain constitutional and representational duties रहते हैं, which is also similar for the Indian president. The monarch also has a less formal role as the head of the nation. So in this regard, you can say the sovereign or the queen in this case acts as a focus for national identity, unity and pride as well. Okay? So in all these roles, the sovereignty is supported by the members of his or her immediate family. The family supports in all the role that the king or queen has to play. Now the next news is about the ongoing Arunachal Assembly. So this article has been taken from the Arunachal Times, and this is about an allegation which has been made by the MLA. MLA ने कहा है कि यहाँ पे जो you can say जो departments है, the departments are not coordinating among themselves, and for this reason जो scheme है, that is the PMKSY scheme, इसी के बारे में हम बात करेंगे. अब ये PMKSY का जो scheme का जो benefits है, this is not reaching to all the people. ठीक है, so PMKSY जो है, it is Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana. Now we'll know from this article only, we know about this PMKSY. Okay, now this PMKSY is important for prelims as well as the GS paper to Indian polity point of view.
Now coming back to the current context, so BJP MLA Lokam Tasar in the assembly only, he has made an allegation that there's a lack of coordination between the departments, okay, in implementing the PMKSY in the state. ठीक है. अब यहाँ पे जो PMKSY इसका मीनिंग क्या है? इट इज प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना. सिंचाई का मीनिंग इरिगेशन है. ठीक है. सो ही एलिजेड दैट द डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, देखिए कौन कौन डिपार्टमेंट आर रेस्पॉन्सिबल एंड हु आर नॉट कोऑर्डिनेटिंग. तो डिपार्टमेंट ऑफ द रूरल डेवलपमेंट, देन वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर. सो दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जो है देयर इज नो कोऑर्डिनेशन अमंग देम. सो दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर implementing the flagship program of the center, but because of their lack of coordination among them, यहाँ पे क्या हो गया है, जो many places in the state are being deprived of the benefits from the scheme. So now let's see what this PMKSY is all about. So this PMKSY, now this is a national mission to improve the farm productivity and ensure better utilization of the resources in the country. So meaning of Sinchayee, as I told you, it is irrigation. ठीक है. So this particular जो ये scheme है, it was launched by Modi जी back in the year 2015. अब ये जो PMKSY जो ये scheme है, जो ये योजना है, it is under the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. Very important. The ministry are often asked in the examination. So this particular PMKSY जो है, it is being implemented to expand the cultivated area. So as I was saying, it is a centrally sponsored scheme है ये. ठीक है. This is an initiative of the Union Government of India, which was launched by Modi जी in the year 2015. ठीक है. तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है. तो इस स्कीम में क्या होता है, सेंटर जो है 75% ऑफ द फंडिंग देता है. ठीक है. सेंटर और स्टेट में जब यहाँ पे जो फंडिंग होता है, तो फंडिंग का जो 75% है वो सेंटर बियर करता है, बाकी 25% स्टेट करता है. बट इन मोस्ट ऑफ द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम यू विल फाइंड, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ रिसोर्सेज और द लैक ऑफ you can say because of the weaker economy in the northeastern region, what happens is that center यहाँ पे ज़्यादा contribute करता है. So in this case also, in the case of the PMKSY as well, center will be contributing 90% of the funding and 10% will have to be the rest 10% will be beared by, you can say, the state government. ठीक है. अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? The objective is to achieve convergence of investment in irrigation at the field level. तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव या ऑब्जेक्टिव क्या है? हर खेत को पानी. सो बेसिकली हर खेत को पानी कब मिलेगा? when the cultivable area is under, when there is more and more cultivable area under assured irrigation. ठीक है. अगर यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एरिया if it comes under irrigation, then it will ensure what? हर खेत को पानी. And also to improve on-farm water use efficiency. ये किसके लिए? So that waste जो वाटर का जो वेस्टेज होता है ना, उसे कम किया जा सके. ठीक है. And also to enhance the adoption of precision irrigation and other way and another water saving technologies, that is more crop per drop. अब ये जो more crop per drop है, ये कैसे अचीव होगा? जो precision irrigation है ना, this is mostly indicating the micro irrigation. ठीक है. जहाँ पे कम पानी से हम यहाँ पे we can yield more benefits or more production from the crops. ठीक है. So to enhance the recharge of aquifers and also to introduce sustainable water conservation practices. So these are the objectives which has been mentioned in the which are been targeted through this PMKSY. And based on this topic only, based on this PMKSY, I've also added a prelims practice question. I want you guys to answer in the comment section. Now the next article is again based on the Arunachal Assembly, which has passed the Tenancy bill. ठीक है. What is the meaning of tenancy? Tenancy का meaning है holding of land or property. So in simple terms, it is rent. ठीक है. So the Arunachal Pradesh Tenancy Bill 2020 was introduced in the House, was unanimously passed. That is without opposition. That has been passed by the members through voice vote. This article is again been taken from the Arunachal Times, and it can be important from the GS paper 2 point of view, where questions from Arunachal polity may also be asked. Now let's see about this current context. So the State Assembly on Thursday it passed a government bill to pave way for private participation in rental housing as a business model for addressing the huge housing shortage in the state. What is a government bill? A government bill is also known as a public bill, which is introduced by a minister. ठीक है. सो अगर कोई मिनिस्टर एक बिल को इंट्रोड्यूस करता है ना, सो ऑब्वियस सा बात है, इट इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, द पॉलिसीज ऑफ द रूलिंग पार्टी. So there is also another type of bill which is used against the public bill. It is known as the private bill. A private bill is when it is introduced by a private member. There is an MLA who is not a minister, and mostly it reflects the policy of the opposition party.
ठीक है. अब इस बिल के बारे में आई बिलीव इट्स अ रियलिटी दैट्स देयर इज अ काइंड ऑफ एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ रेंट हाउसेस इन द स्टेट्स, स्पेशली इन द कैपिटल रीजन. सो वेर पीपल हु विजिट फॉर वर्क और एनी अदर मैटर, फॉर स्टडी हो गया या कोई भी पर्पज के लिए जब विजिट करते हैं, दे फेस लाइक क्वाइट अ स्ट्रगल टू फाइंड द रेंट हाउस. So this bill has been introduced to recover from this shortage. Okay, तो दिस बिल यहाँ पे क्या किया गया है, इट इज मोस्टली वेलकमिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन द हाउसिंग सेक्टर सो दैट द रेंटेड हाउसेज जो है इट कैन बी मेड अवेलेबल एंड अफोर्डेबल एज वेल. ठीक है. तो दिस बिल वाज टेबल बाय इट हैज बीन टेबल बाय इट वाज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय टाउन प्लानिंग मिनिस्टर कामलुंग मोसांग. तो इन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया था एंड इट हैज़ बिन पास यूनानिमसली थ्रू वॉइस वोट. ठीक है. अब इन्होंने ये भी कहा है थ्रू दिस बिल कि अगर ये इफ इट बिकम्स एन एक्ट इट विल बी एबल टू क्रिएट अ वाइब्रेंट सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव रेंटल हाउसिंग मार्केट इन दिस स्टेट. एंड definitely this is the need of the hour because it will help the people who visit from different places to find a place as a shelter. So these were the questions that I had shared in the previous video. I hope you guys have attempted the questions. Now let's look at the answers. So the answers are, so the first question, yeah, only Supreme Court can start suo motu case of contempt of court. No, both the Supreme Court and High Court can start it. Contempt of court is defined in Constitution. No, it is mentioned, but it is not defined. So none of the above sentences are correct. सिक्किम का फर्स्ट एयरपोर्ट पाक्योंग में है. द केबुल लामजाओ द फ्लोटिंग नेशनल पार्क, द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड इज इन मणिपुर. So this is all from my side for today. Thank you so much for joining in, guys. Bye bye. Have a great day. Thank you.